हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CivTech सिंप्लीफाइड। दिस इज इंजीनियर इमरान अजीज। मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 19 और इसमें हम डिस्कस करेंगे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 181 टू 190। सो फार वी हैव कंप्लीटेड 180 MCQs। आई होप आपने उन वीडियोस को लाइक किया होगा, उनसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर विद दिस वीडियो पार्ट, जिसपे हम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फर्दर आपके साथ शेयर और डिस्कस करेंगे थ्रू अ प्रेजेंटेशन। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन जहां पे फर्दर ये क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं। मीनवेल आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम MCQs इन इरिगेशन इंजीनियरिंग पार्ट 19 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 181 टू 190। क्वेश्चन 181 says that the flexibility of a sub-proportional outlet is less than 1. Option A, yes. Option B is no. So it is correct. It is less than 1. Flexibility of sub-proportional outlet is less than 1. So A is the correct answer for this question, which is yes. 182. For the pipe outlet to be proportional, the outlet is set at dash the depth below the water surface. Option A 0.3 times, option B 0.5 times, option C 0.8 times. For pipe outlet to be proportional, the outlet is set at 0.3 times the depth below the water surface. A is the correct answer for this question. 183. In the case of proportional outlet, the setting is equal to the ratio of outlet index to the channel index. Option A is correct. Option B is incorrect. So A is the correct answer for this question. 184. The setting for a hyper-proportional outlet is dash as compared to the proportional outlet. Option A is more. Option B less. Option C is same. So it is more as compared to a proportional outlet. Setting of a hyper-proportional outlet is more as compared to a proportional outlet. A is the correct answer for this question. 185. The setting for a sub-proportional outlet is dash as compared to proportional outlet. Option A is more, option B is less and option C is same. So here the answer is less. जब सब proportional outlet को आप कंपेयर करेंगे proportional से, तो उसकी setting आपको कम रखनी है proportional के रिस्पेक्ट से. B is the correct answer for this question. 186. The ratio between the depths of water levels over crest on the downstream and upstream of the module is known as option A flexibility, option B sensitivity, option C drowning ratio, option D is module ratio. So C is the correct option. This ratio is called drowning ratio. Ratio between the depth of water level over crest on the downstream and upstream of the module is called drowning ratio. 187. Which of the following is a type of non-modular outlet? Option A submerged pipe outlet, option B open flume outlet, option C Kennedy gauge outlet, option D all of these. So A is the correct answer. Non-modular outlet इसमें से submerged pipe outlet है. So A here is the correct answer for this question. 188. Which of the following is a type of semi-module outlet or semi-modular outlet? Option A is submerged pipe outlet. Option B is open flume outlet. Option C Kennedy's gauge outlet. Option D all of these. C is the correct option. It's Kennedy's gauge outlet. Semi-modular outlet कहलाता है. 189. The slope of a canal for a discharge of 300 cubic meter per second should be option A 1 in 4,000, option B 1 in 6,000, 1 in 8,000 and 1 is 10,000. So 300 cubic डिस्चार्ज के लिए कैनाल का स्लोप 1 in 8,000 होना चाहिए. 190. A diversion head work is constructed to option A raise water level at the head of the canal, regulate the intake of water into the canal, option C reduce fluctuations in supply level of river, option D is all of these. All these are the correct options for diversion head work. Diversion head work आपका बनता है क्योंकि ताकि कैनाल का हेड जो है वो रेज किया जा सके, इनटेक जो है पानी की कैनाल के अंदर उसको रेगुलेट किया जा सके, इसी तरह फ्लक्चुएशंस अगर आपके रिवर साइड पे आ रही हैं तो उनको कंट्रोल किया जा सके. सो A B C
all are the correct options for this question. So B here is the correct answer. So friends, this was part 19 of our ongoing video series on irrigation engineering multiple choice questions, जिसमें हमने mainly 10 questions आपके साथ share किए और हमने discuss किया मुख्तलिफ outlets को, whether it is proportional or semi proportional outlets, उसके मुख्तलिफ features को हमने discuss किया. So I hope आपने learning develop की होगी. हमारे इन videos को like करें, share करें और अपनी community के साथ इनको discuss भी करें. और अगर आपका कोई feedback है या questions हैं, so you can send in the comment box, as well as we have our email address which is simplified@gmail.com. तो आप उस पे भी हमें रीच आउट कर सकते हैं. हमारे चैनल के ऊपर पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की भी वीडियोस अवेलेबल हैं, जिनमें हमने रूल बाय रूल हर रूल को एक्सप्लेन किया है बहुत डिटेल में. तो डू वॉच दोज वीडियोस एज वेल और अपनी कैपेसिटी इनहेंस करें. तो लेट्स मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम फर्दर 10 MCQs आपके साथ शेयर करेंगे. टिल देन अपना ख्याल रखें. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.